Hello students, welcome back to Edviz Learning. Today we will be continuing with the chapter number 1 of Algebra, linear equations in two variables. So in the previous session we started this chapter. हम लोगों ने कुछ introductory part देखा इस chapter का. We saw how to find out the value of x and y, two variables in a linear equation. We need not just one but we need two linear equations. ठीक है, हम लोगों ने substitution method and elimination method को भी revise किया. एंड देन वी सॉ वन मोर मेथड जहां पे एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन अगर हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोगों ने देखा इन द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट. एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2, which is based on the graphical solution, graphical method of solving linear equations in two variables. So हम लोग क्या करेंगे, जो दो इक्वेशंस होंगे हमारे पास जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है, we will plot them on the graph paper. ठीक है, हम लोग उनका ग्राफ बनाएंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट लीनियर इक्वेशन. ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर लेते हैं. 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी किया है बट लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज इट. सो यू पीपल मस्ट बी अवेयर दैट वी हैव टू एक्सिस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, ये होता है ओरिजिन 0 एंड x का जो लेफ्ट साइड है दैट इज द पॉजिटिव साइड, राइट साइड में जो दिख रहा है दैट इज द नेगेटिव साइड. y के लिए सेम, द अबव पार्ट इज पॉजिटिव एंड बिलो ओरिजिन इट इज नेगेटिव. एंड हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन दिस ग्राफ पेपर दैट वी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी नीड टू प्लॉट 2,0. ओके, तो जहां पे भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा दैट मीन्स द पॉइंट विल लाई कंप्लीटली ऑन द x एक्सिस. सो ये 2,0 कहां पे आएगा पॉइंट, इट विल बी हियर एट 2 ऑन x एक्सिस. ठीक है, y यहां पर 0 होगा बट x का वैल्यू 2 है. करेक्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर. किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें क्या लगता है, वी नीड एन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इट इज द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट. जब साथ में लिखते हैं हम लोग सो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर. एंड फ्रॉम लास्ट ईयर आई होप यू रिमेंबर that the x coordinate is also called as abscissa, okay, and the y coordinate is also called as ordinate. तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें ये दोनों चीजें लगेंगी, abscissa and ordinate. So we need the ordered pair to plot a point. Let us see some more examples. Suppose I need to plot a point 1,4. तो ये 1,4 कहां पर आएगा, x एक्सिस पे हम लोग 1 ढूंढेंगे एंड देन उसी रो में y एक्सिस के लिए 4 ढूंढेंगे. दिस इज द पॉइंट 1,4. ओके, एंड सिमिलरली जैसे यहां पर 2,0 हम लोगों ने x एक्सिस पे प्लॉट किया, सपोज आई हैव टू प्लॉट 0,3. ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोगों को पता चल रहा है कि x कोऑर्डिनेट 0 है. अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस. सो 0,3 कहां पे आएगा, the point will be here on y axis at 3. ठीक है, this is 0,3. So ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट ईयर प्लॉट कैसे करना है ग्राफ पेपर पर ये देखा था इन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, आई होप यू नो द साइन ऑफ x एंड y इन ईच क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है. Okay, third quadrant में x and y both are negative and in the fourth quadrant x is positive but y is negative. So ये last year का revision था, एक quick revision we did. Now let us see कि किसी line के equation को okay, हम लोग graph paper पर कैसे plot करेंगे. For that we will take an example or let us just start with the next practice set. Practice set 1.2 में first question अगर हम लोग देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. वहां पे क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. सो दो इक्वेशंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं. टू लीनियर इक्वेशंस आर गिवन टू अस. दिस इज वन इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल टू 4. ठीक है, अब इनको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिंपल है, हम लोग कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड पे हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली अगर मुझे ग्राफ बनाना है किसी लाइन का, सपोज दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पेपर पर मुझे प्लॉट करना है, आई विल नीड डिफरेंट पॉइंट्स. करेक्ट, ग्राफ पेपर पर अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है
तो टू ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. अगर ग्राफ पेपर पर मुझे सिर्फ एक पॉइंट पता है, उस पर मैं इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ. सो एक स्पेसिफिक लाइन इस इक्वेशन की अगर मुझे बनानी है तो आई विल नीड 2 पॉइंट्स. ओके, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे. बट इन द बोर्ड पैटर्न वी आर सपोज टू फाइंड आउट 4 डिफरेंट पॉइंट्स फॉर एवरी इक्वेशन. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं ग्राफ पेपर पे, और उसको ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन फॉर दैट इक्वेशन. तो अभी इस इक्वेशन के लिए हम लोग पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. हियर वी जस्ट हैव टू अज्यूम सम वैल्यूज ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज हम लोग अज्यूम करेंगे. ठीक है, एंड फॉर दैट वैल्यू वी विल फाइंड आउट कि y का क्या आंसर आ रहा है. सपोज यहां पर पहले टेबल में अगर देखेंगे हम लोग, x को हम लोगों ने अज्यूम किया है 3. करेक्ट. सो फॉर x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई इक्वल टू 3. करेक्ट, x की जगह पे मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो इक्वेशन में x मैंने 3 अगर लिया है तो y x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल गो ऑन द अदर साइड. y का वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस 3, दैट इज 0. ओके, सो दैट इज वाई द फर्स्ट पॉइंट दैट यू सी हियर इन द टेक्स्ट बुक इज 3, 0. x 3 y 0. तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिल गया 3, 0. सिमिलरली इन्होंने ही बोला है कि फाई लेना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट के लिए मुझे y का वैल्यू. तो अगर मैं y का वैल्यू फाई अज्यूम करता हूं, फॉर y इक्वल टू 5, हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज इट इज द ब्लैंक स्पेस हियर, वी नीड टू फाइंड इट आउट. तो इस बार क्या होगा? x प्लस y की जगह पे 5 इक्वल टू 3. इक्वेशन वही रहेगा, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं. तो यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा? 5 दूसरे साइड चला गया, इट बिकेम 3 माइनस 5, सो द आंसर इज -2. ओके, so for y equal to 5 we are getting the value of x as -2. so the point is -2, 5. x, y हम लोग हमेशा लिखते हैं, I hope you know that. ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड वाले के लिए हम लोगों को y 3 लेना है. so for y equal to 3, again for the third one, for y equal to 3, इस इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा? x प्लस 3 इक्वल टू 3. y का वैल्यू मैंने 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया. टेक 3 ऑन द अदर साइड, x का वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस 3, दैट इज 0. करेक्ट. सो फॉर y इक्वल टू 3 वी आर गेटिंग x 0. दैट्स व्हाई यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और द पॉइंट इज 0, 3. तो हम लोगों को पहले ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा फॉर द इक्वेशन, एंड देन हम लोगों को x y फाइंड आउट करना पड़ेगा अज्यूम करके. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड सम ऑर्डर्ड पेयर्स जिनको हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. अगर वो तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, दैट मीन्स यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक, और मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू हैव प्लॉटेड द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इन एन इनकरेक्ट वे. रॉन्ग तुम लोगों ने प्लॉट किया है उसको. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट टेबल. सेकेंड टेबल के लिए भी सेम करना है. सी यहाँ पर फर्स्ट y 0 लेने बोला है, सो फॉर y इक्वल टू 0. अच्छा, इक्वेशन अभी ये वाला है, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4. x का वैल्यू क्या आ गया? 4. ठीक है, सो फॉर y इक्वल टू 0, x वी आर गेटिंग इज 4. सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज 4, 0. करेक्ट. देन वी हैव x minus 1, and for that we have to find the value of y. so therefore for x equal to -1, इक्वेशन में क्या होगा? -1 minus y equal to 4. take -1 on the other side, or rather take y on the other side and 4 on the left hand side. you will get -1 minus 4 as the value of y. तो y का वैल्यू यहां पर क्या आएगा? -5. करेक्ट. we are getting y equal to -5. this is the second ordered pair. और थर्ड वन तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, 0 और -4. चेक करके भी देख सकते हो, जब x 0 होगा y का वैल्यू क्या आएगा? -4 आएगा. इक्वेशन में x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, सेम आंसर आएगा. करेक्ट. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम गेटिंग फॉर बोथ द इक्वेशंस. तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इससे हम लोगों को सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? द वैल्यू ऑफ x एंड y जो हम लोग फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करके, वो कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर सिंपल है. तुम लोगों को बस ये दोनों टेबल्स में जो पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है. सो वील जस्ट प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ये हम लोगों को जो पॉइंट्स मिले थे वही हम लोगों ने प्लॉट किए. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 3,
पहला पॉइंट था 3,0, सो 3,0 हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया है, करेक्ट. देन -2,5, so -2,5 we have plotted it here, okay. Then 0,3 we have plotted it here on the y axis, ठीक है. फिर अगर देखेंगे हम लोग तो ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे. तो दिस स्ट्रेट लाइन इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है. सिमिलरली ये तीन पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे प्लॉट किए तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे आए. व्हाट आर द पॉइंट्स? -1, -5, 4, 0 which is there, okay, and then 0, -4 it is here. So we plot these equations, और इक्वेशंस का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, so we get a straight line, ठीक है. एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा मुझे यहाँ पे? So the solution is simple. ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट होंगी, okay, that point will be my solution. So you can see here the point of intersection is here, they are meeting here, and ये पॉइंट अगर ग्राफ पेपर पर एग्जैक्टली देखेंगे हम लोग, so you get the value as x के लिए 3.5, 3 और 4 के एग्जैक्टली बीच में, ओके, और y पे 0 और 1 के एग्जैक्टली बीच में, -1 के. So 3.5, -0.5 is the solution here. Therefore the solution is x equal to 3.5, okay, and y equal to -0.5 या फिर -half भी लिख सकते हो तुम लोग, करेक्ट. So this is the solution. तो ग्राफ पे जब हम लोग इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, we automatically get the answer or the solution for those two equations, okay. Wherever the two lines will meet, that is the solution for my equation. So this is how we solve all the linear equations in two variables graphically, ठीक है. So this was just an activity question जहां पे हम लोगों को टेबल फिल करना है. So please make sure you fill the table, and after that please draw this graph on a graph paper. I hope you are sitting with a graph paper with you. I informed you in the previous lecture that in the next lecture we will be needing graph papers, ठीक है. So ये बनाने के लिए I'll give you some time, take 3 minutes, then we will go on to the next question.
All right, students, let's move on to the next question now. So the next question we are going to solve is question number 2, first one. Okay, the question is to solve the following simultaneous equations graphically. कुछ equations के set दिए हुए हैं different questions में. We have to solve them graphically. So the very first question is these two equations, x plus y equal to 6 and x minus y equal to 4. हम लोग ये दोनों equations बारी बारी से solve करेंगे. First let us solve for x plus y equal to 6. पहला equation पहले solve करेंगे. So you'll be needing to draw this table. हम लोग 4 points find out करेंगे because board exam के हिसाब से you need to find 4 different points. Correct? So हम लोग start करेंगे x से. ये first equation है x plus y equal to 6. If x equal to, first हम लोग 0 लेते हैं. ओके अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो 0 के लिए y का वैल्यू क्या आएगा वो हम लोगों को देखना है. द इक्वेशन इज x plus y equal to 6. So we will get 0 plus y equal to 6. तो y का आंसर क्या आ रहा है? Just 6. Okay, so when x is 0, y का वैल्यू आ रहा है 6. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए it is 0, 6. This is the first ordered pair. ठीक है. Next, let us take some other number. So if x equal to let us say 1, पहले 0 ले लिया, अभी 1 लेते हैं. ओके सो 1 के लिए क्या वैल्यू आता है? When x is equal to 1, let us see what we get. 1 plus y equal to 6. ये हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा. x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. So y का वैल्यू आएगा 6 minus 1, that is 5. Okay, that means when x we are taking it as 1, the value of y is 5. So the second ordered pair is 1, 5. Okay, let's go to the next. We can take the value of x as any number that we want. Let us take 2 this time. ठीक है, छोटा वैल्यू लेंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करना इजी होगा. If x equal to 2, let us take 2. So if x का वैल्यू 2 लिया हम लोगों ने, we will get 2 plus y equal to 6. That means y will be 6 minus 2, that is 4. Okay, so यहाँ पे x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही है. We are getting 2, 4 as the third ordered pair. Okay, and finally one more value we need. So let us take the value of x as 3 this time. 0, 1, 2 ले लिया, अभी 3 भी ले लेते हैं. तो 3 के लिए क्या आता है? 3 plus y equal to 6. That means the value of y will be 6 minus 3, just 3. Correct? So here we will get for 3 the value of y is also 3. So the fourth ordered pair is 3, 3. ठीक है. Now this is for just one equation. ये एक equation के लिए हम लोगों ने लिख लिया. Similarly we have to do for the second equation also. But before we go to the next page, I want you to note this down. So take 2 minutes to note this down, then we'll go on to the next page.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अभी हम लोगों ने जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था वैसे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे. सो द सेकेंड इक्वेशन इज x minus y equal to 4. So for this, if the value of x, फिर से वही वैल्यूज ले लेते हैं. ओके, x के लिए भी अगर मैंने 0 ले लिया यहाँ पर वापस से, तो वी विल गेट 0 minus y equal to 4. y का वैल्यू विल बी -4. करेक्ट. माइनस साइन विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड. वी विल गेट y equal to -4. ओके, सो एक वैल्यू आ गया मुझे. लेट्स फिल अप द टेबल. When we are taking x 0, y we are getting -4. So the first ordered pair is 0, -4. Okay, let's go to the second one then. If x equal to 1, okay, let's take the value as 1 this time. 1 minus y equal to 4. This is what we will get. So y will be equal to, just change the sides, minus y on the right hand side, 4 on the left hand side. You will get 1 minus 4 equal to y. So y will be equal to -3. Okay, so for value of x as 1, value of y that we are getting is -3. So 1 -3, ये हो गया मेरा second ordered pair. Okay, let us now find out the third and the fourth one. So for the third one, if x equal to, this time let us take 2. So 2 minus y equal to 4. That means y will be equal to, change the sides, y अगर उस साइड पॉजिटिव हो गया, here we will get 2 minus 4. Okay, so -2 this time. So the third ordered pair is 2, -2. Correct. x का वैल्यू 2 लेने पे y भी नेगेटिव आ रहा है, that is -2. Next, let us take one more value of x, this time 3. So 3 minus y will be equal to 4. That means y will be equal to, same, change the side, y on the right hand side, 4 on the left hand side. You will get 3 minus 4, that is -1. Okay, so the fourth ordered pair is 3, -1. तो अभी सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल चुके हैं. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. सेकेंड इक्वेशन के लिए ऑल्सो वी गॉट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. नाउ वी जस्ट नीड टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ पेपर. बट बिफोर दैट आई वांट यू टू नोट दिस डाउन. So take one more minute. Okay, I'll give you 1 minute to note this down. Then we'll move on to the graph part. Okay students, so इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? Let us see that now. So on a graph paper when you plot this, this is what you will get. ठीक है, ये हम लोगों को पॉइंट्स मिले थे 0, 1, 2, 3 के लिए. These are the ordered pairs that we got. We just plotted them on the graph paper. First equation के लिए first point is 0, 6. So 0, 6 will be on y-axis. As you can see, this is the point 0, 6. 1, 5. 1, 5 will be here. Okay. Then we have 2, 4. In the same straight line, you will see 2, 4 and then 3, 3. So when you join these 4 points, they will lie on a straight line only. ठीक है, अगर straight line पे नहीं आ रहा है कोई point तुम लोगों का, then you have done something wrong. Make sure you correct your mistake. So this is the first line, x plus y equal to 6. Okay. Then second line के लिए we have x minus y equal to 4. ये 4 ordered pairs आए थे. 0, -4. It will lie again on the y-axis. Here is the point 0, -4. Then 1, -3. This is the second point. Third point is 2, -2. Then we have 3, -1. Again, these 4 are on the same straight line, that is x minus y equal to 4, which is the second equation. Okay? When you join these two,
these 4 points, you will get a straight line again, which is x minus y equal to 4. ठीक है, so these two lines are intersecting at this point exactly. Okay, ये point जो है 5,1, this is where these two lines are intersecting exactly. So x का value क्या है यहाँ पर 5, y का value क्या है यहाँ पर 1. ठीक है, so when you solve these equations even by using other methods, when you solve them using elimination method or substitution method, you will get the same answer. x का आंसर आएगा 5, y का आंसर आएगा 1. ग्राफिकली भी हम लोगों को सेम सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, सो यू ऑल्सो नीड टू मेंशन द सॉल्यूशन आफ्टर यू आर डन प्लॉटिंग द पॉइंट्स. सो हम लोग सॉल्यूशन एक लाइन में मेंशन कर देते हैं यहाँ पर. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x is equal to 5. as you can see 5 is the x coordinate or the abscissa. ठीक है, and y equal to 1. Okay, from the graphical solution you can say that the value of x is 5 and y equal to 1. So again I'll give you some time to draw the graph properly. Make sure graph पर जो कुछ भी दिख रहा है वो सब fill कर दे हम लोग exactly. यहाँ पर x axis y axis दिखना चाहिए. Correct, this is your x axis, x dash नेगेटिव साइड को हम लोग x dash से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज y dash, नेगेटिव y, ये चारों दिखना चाहिए. आफ्टर दैट स्केल भी दिखना चाहिए. ठीक है, हम लोगों ने क्या स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट. करेक्ट, सो स्केल ऑल्सो शुड बी विजिबल एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन. तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 का लाइन है, इसीलिए इक्वेशन मेंशन्ड है यहाँ पर. सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन भी मेंशन्ड है. ऑल्सो जो पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोगों को ब्रैकेट में मेंशन करने हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंड आफ्टर दैट फाइनली सॉल्यूशन वाला पॉइंट भी मेंशन करना है. सो आई हैव मेंशन्ड इट विद अ डाउनवर्ड एरो. as you can see 5,1 which is our solution, the intersection of the two lines, I have mentioned it there. Correct, so ये सब ग्राफ पेपर पर दिखना चाहिए. Now please make a note of this. I'll wait for 1 more minute, then we'll move on to the next question. Okay students, let's continue. Moving on to the next question. As you can see, question number 2 is exactly like the first question. यहाँ पे भी हम लोगों को x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3 ये प्लॉट करना है. So ऐसे दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एक एक्टिविटी के फॉर्म में और एक द प्रीवियस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. इवन द थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया. Question 2, 3 are your homework questions apart from the other questions that you have in your homework sheet. Okay, next we will solve question number 4. Let's go to question number 4.
So as you can see, I have written down the equations already. Question 4 में the two equations that are given to us are 3x minus y equal to 2. This is the first equation. 2x minus y equal to 3. This is the second equation. So पहले हम लोग एक एक करके जाते हैं. Let us solve this equation first. 3x minus y equal to 2. Okay. So for this first equation, फिर से हम लोग वही साइकिल रिपीट करेंगे. Let us first assume if x equal to 0. अच्छा, यहां पर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा. इन सम क्वेश्चंस व्हेन यू टेक द वैल्यू ऑफ x एज 0, यू डोंट गेट अ प्रॉपर वैल्यू जो हम लोग प्लॉट कर सके ग्राफ पे. y का वैल्यू अच्छे से नहीं आता है. सो यू हैव टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पर x 0 लेने पे y का भी एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 0. सो व्हेन वी टेक x 0, व्हाट विल हैपन? 3 multiplied by x will become 3 multiplied by 0 and then minus y इक्वल टू 2. करेक्ट. सो 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस साइन उस साइड चला गया, y का वैल्यू क्या आएगा? जस्ट -2. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज -2 व्हेन x इज 0. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 0, -2. नेक्स्ट लेट अस गो टू द अदर वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू assume 1 this time. Let us assume the value of x as 1. So the equation will become 3 into 1 minus y equal to 2. Correct? So again we are getting 3 here. y उस साइड चला गया, 2 यहां पर आ गया. 3 minus 2 equal to y. This becomes my equation. So the value of y is 1. Correct? So x 1 लेने पे y भी 1 आ रहा है. Both the values here we are getting are 1 and 1. ठीक है. So 1, 1 is my second ordered pair. Third one के लिए let us assume if x is equal to 2. Correct? So x को 2 लेने पे क्या हो रहा है? We are getting 3 multiplied by x. So 3 multiplied by 2 minus y equal to 2. So ये आ जाएगा 6 minus y equal to 2. Change the side of y and 2. Minus y, there it will become positive y. 2 here becomes negative 2. Okay, so the value of y is 4. Okay, so x 2 लेने पे y 4 आ रहा है. This is the third ordered pair 2, 4. Next, one more value we have to find out. इस बार 3 ले लेते हैं x का value. So if x is equal to 3, what will the equation become? 3 into x है तो 3 into 3 हो जाएगा, minus y equal to 2. Correct? You will get 9 minus y equal to 2. Change the sides again. y का वैल्यू क्या आएगा? 9 minus 2, that is 7. Okay, so the fourth ordered pair is for the value of x 3, the value of y is 7. 3, 7. ठीक है. This is done for one equation. So let's go to the other equation, but before that please make a note of this. I'll wait for 2 minutes, then we'll move on to the next page. All right, students, let's continue. Moving on to the next page. So for the second equation, we are going to do the same thing. We have 2x minus y equal to 3, the second equation here. So if x equal to 0, once again 0 लेने पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इसीलिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर कीपिंग इट सिंपल. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस y इक्वल टू 3. ओके, वी विल गेट 0 माइनस y इक्वल टू 3. सो y का वैल्यू क्या आएगा? जस्ट -3. साइन उस साइड चला जाएगा. So the first ordered pair here is for the value of x as 0,
y is minus 3, correct? So the ordered pair is 0 comma minus 3. Now let us find out the second one. So if x equal to 1, okay, second case, if x equal to 1, we will get 2 into 1 minus y equal to 3, correct? 2 into 1 minus y equal to 3. So 2 minus y equal to 3. y का वैल्यू क्या आएगा? 2 minus 3, that is minus 1. Okay, so negative आ गया y का वैल्यू. For x equal to 1, we are getting y minus 1. 1 comma minus 1. This is my second ordered pair. Let us find out the third and fourth also. So third one के लिए let us say x equal to 2. If x is equal to 2, the equation will become 2 multiplied by 2 minus y equal to 3. Okay, so 4 minus y equal to 3. That means y का value क्या है? 4 minus 3. That is just 1. Okay, so the third ordered pair here is for x equal to 2, y equal to 1. X equal to 2, y equal to 1. The value of the ordered pair is 2 comma 1. Finally, let us find out the last ordered pair here. So if x equal to 3, फिर से 3 assume करते हैं हम लोग एक बार, we will get 2 into 3 minus y equal to 3, correct? 2 into 3 minus y equal to 3. That means here we will get 6 minus y equal to 3. So the value of y is 6 minus 3, that is just 3. Okay, so the final ordered pair is 3 comma 3. ये हम लोगों का fourth point होगा. So now we have 4 points each for both the equations. Next part, you already know, we are just going to plot the points, join them to make a straight line, and दोनों lines जहाँ पे intersect होगा, that point will be my solution for x and y. So before we go to the graph part, I want you to make a note of this. I'll wait for 1 minute, okay, then we'll move on to the graph part. Please finish writing this fast. Okay students, now let us see the graph of this, okay, which is already plotted. As you can see, we have plotted both the equations on the graph paper. First equation के जो 4 points थे, 0 comma minus 2 on the y-axis, here you can see, then 1 comma 1, again 1 comma 1 here in the same straight line, ठीक है, 2 comma 4 and then 3 comma 7. These are the 4 points. इनको join किया, इक्वेशन मैंने लाइन के ऊपर मेंशन कर दिया, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 2. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 0 comma minus 3 on the y-axis, it is here. Then we have 1 comma minus 1, 1 comma minus 1 is here, correct? Then 2 comma 1, the third point, then 3 comma 3, the fourth point. ये चारों भी as you can see they lie on the same straight line, तो easily join कर सकते हैं हम लोग. And if you do it properly, if you do it accurately, this is the point that you will get as the solution. ठीक है, solution वाला point कौन सा है? -1 comma -5. ठीक है, so this is my solution for this equation. The value of x is -1 abscissa and y is -5, which is the ordinate. ठीक है, ये लास्ट में हम लोगों को हमेशा मेंशन करना है. आफ्टर यू प्लॉट द ग्राफ्स, लास्ट में एक लाइन में मेंशन कर दो सॉल्यूशन आल्सो, दैट द वैल्यू ऑफ x इज -1, y इज -5. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई विल गिव यू 3 minutes टू ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर प्रॉपर्ली. मेक श्योर यू फिनिश इट प्रॉपर्ली, देन वील कंक्लूड द सेशन.
Okay students, I hope you are done with this. So we will be solving the next two questions in the next session, since we are already up with the time limit for this session. Okay, so till that time, till we meet again, make sure you practice a lot of graph questions. Homework sheet में और भी बहुत सारे questions है which are from your problem set. ठीक है, make sure you solve them properly, and thank you everyone. We'll end the session here.